Hello everyone. So today we're gonna learn how to perform matrix operations on two-dimensional array. Uh, okay, and this is your experiment number 5 in lab manual. So the point here is matrix multiplication using 2D array. 2D is basically a two-dimensional array. So everybody knows how to declare one-dimensional array. Okay, here you can see int a of 10 10. So int is a data type, a is a name of array, and 10 is a size of array. Okay, so this is how we declare a one dimensional array. But for the syntax of two dimensional array is data type, name of the array, row size, and column size. Okay, so here data type is int, name of array is a, row size is 3, and column size is 2. So there will be 3 rows and 2 columns. Okay, so here you can see a table where there are 3 rows and 2 columns. Okay, rows is we will declare rows by using I, and columns by using J. Okay, so initially value of I and value of j will be 0. Okay, then value of I will be 1 and value of I will be 2, and j, since there are only 2 columns, so j, value of j will be 0 and 1. Okay, so here you can see these are rows and these are columns. For I is equal to 0, initially I will be 0 and j will be 0. So for 0 and 0, I have accepted one value which is 1. Okay, here you can see in a parenthesis, uh, 0 0, that is value of I 0, and value of j is 0. Okay, um, now, value of will be 0, but value of j will be 1. For 0, 1, I have accepted the value 2. Okay. Then value of I will get incremented and I will be 1. Okay. So value of I will be 1 and j will be 0. Okay. For that I accepted value as 8. Okay. Now I will be 1 and j will be 1. So value is 6. Okay, then I will get incremented, and I have accepted value is 9 for I is equal to 2 and j is equal to 0, and for I is equal to 2 and j is equal to 1, value is 0. Okay, this is how we will accept the values. First, we will increment the inner loop, that is inner loop would be j, and then the outer loop which is I. Okay, so basically we will need two for loops, one for I and one for j. Okay, now we will perform one program in which we will perform addition of two matrices. Okay, by using a two-dimensional array. Okay, so for addition we would need two arrays, two-dimensional arrays. So first, two-dimensional array is A, and the size is it has 3 rows. Okay, A of 3, 3, like it has 3 rows and 3 columns. Okay, then second array is B, it again has 3 rows and 3 columns. Okay, and the third array is C. In C we will store the result of A and B. Okay, and for row we will need I, and for column we will need J. Okay, so basically we will perform addition of A and B, and we will store the result of addition in C. Okay, so first of all we will accept the first uh, matrix, that is A. Enter A. For A, since there is 3 rows and 3 columns, and for rows we will use I, and for columns we will use j. So we will need two for loops. First is a for I, it will start from 0, I is less than 3, since there are only 0 1 2 3 rows. Okay, I plus plus. Okay,
and again there will be another for loop which is j is equal to 0 since j starts from 0. J is less than 3 since there are only 3 columns. So j is equal to 0, j is equal to 1, and j is equal to 2. Okay, j plus plus. Okay, now C in a of I j. Okay, and it will um, complete the two for loops. Okay, so what will happen is, since a of I, initially value of I will be 0 and value of j will be 0. I is 0 and j is 0. For I is 0 and j is 0, it will accept one value. Okay, if I write 1, 2, and any value. Okay, next the inner loop will get incremented. Okay, so inner loop is j and outer loop is I. Okay, so inner loop क्या होगा, j का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट. नाउ j का वैल्यू होगा 1 बट I का वैल्यू 0 ही होगा सिंस आउटर लूप वैसे ही है, सिर्फ इनर लूप क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, so for I is equal to 0 and j is equal to 1, एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा. नाउ j का I का वैल्यू 0 ही रहेगा एंड j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा. नाउ j का वैल्यू होगा 2, सो I is 0 and j is 2. इट विल एक्सेप्ट वन वैल्यू. ओके, नाउ j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा बट ये क्या हो जाएगा, लूप फेल हो जाएगा, तो वो आउटर लूप में जाएगा. नो I का वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होगा विच इज 0. 0 था, अभी क्या होगा 1. नाउ I इज इक्वल टू 1. नाउ वो वापस से j में जाएगा. नाउ j का वैल्यू क्या होगा 0. सो I इज इक्वल टू 0 1 एंड j इज इक्वल टू 0. ठीक है, वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. उसके बाद I का j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, सो I 1 ही होगा, j भी 1 होगा. ठीक है, नाउ j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, I 1 ही रहेगा, j क्या होगा 2 होगा. तुम लोग को देखना है कि जब भी इनर लूप फेल होगा तो आउटर लूप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, पहले इनर लूप ही वर्क होगा, इनर लूप जब फेल होगा तब आउटर लूप वर्क होगा. नाउ जब भी इनर लूप फेल होगा तो आउटर लूप वापस से आई इंक्रीमेंट होगा. आई का वैल्यू था 1, अभी क्या हो जाएगा 2, तो आई 2 होगा एंड वो इनर लूप में जाएगा तो जे का वैल्यू पहले 0 होगा. सो इधर 1 एंड ए 0, सॉरी इधर होगा 2 एंड इधर होगा 0. फॉर ए ऑफ 2 1 के लिए एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू होगा 1, आई का वैल्यू 2 ही होगा, फिर जे का वैल्यू होगा 2, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2. ओके, उसके बाद इनर लूप फेल हो जाएगा, बाहर तुम लोग आओगे तो आउटर लूप भी फेल हो जाएगा और तुम लोग फॉर लूप के क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे. ठीक है, सेम वे हम लोग क्या करेंगे, एंटर बी. ओके, सेम फॉर लूप होगा. फॉर I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus. Again same j का for loop होगा, j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus. Okay, C in होगा b of I जी. ओके, ये फॉर लूप फॉर लूप भी सेम वर्क करेगा जैसे हम लोग ने ए का फॉर लूप देखा था. ठीक है, ना तुम लोग का ए का वैल्यू एक्सेप्ट हो गया, बी का वैल्यू एक्सेप्ट हो गया. ठीक है, अभी क्या करना है, तुम लोग को एडिशन करना है. तो बेसिकली तो हम लोग क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट हियर तुम लोग को सी के लिए भी क्या है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा सिंस तुम लोग को हर एक वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, उसका एडिशन करने के लिए भी क्या करना होगा, वैल्यू लगाना होगा. एडिशन इज ओके. So again for loop I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus. ठीक है, for j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus. Okay,
नाउ इधर तुम लोग को क्या करना है, सो नाउ विल राइट द फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू A प्लस B। सो C ऑफ I J, सिंस हम लोग ने फॉर लूप लगाया तो तुम लोग को फॉर्मूला I J के फॉर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, J प्लस B ऑफ I J। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सी आउट करना है, सी, ठीक है, सी आउट, ठीक है। मैं करूँगी सी ऑफ आई जी। ओके, ये दो फॉर लूप इधर क्या हो जाएंगे, क्लोज गेट सी एच एंड वर्ड मेन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग रन करके देंगे। ओके, ठीक है। सी एंटर ए। नाउ ए के लिए तुम लोग ने 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया था, मतलब उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, लाइक टोटल 9 वैल्यूज तुम लोग को एंटर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वन ही 9 टाइम्स एंटर करने वाली हूँ। ओके, सो एंटर बी अगेन, मैं वन ही 9 टाइम्स एंटर करने वाली हूँ। तो एडिशन इज 2 2 2 2, मतलब हम लोग का आंसर राइट आ रहा है, बट ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, एक तुम लोग को मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, एक हम लोग टैब देंगे बीच में, सो दैट वो वैल्यूज के बीच में तुम लोग को क्या दिखेगा, स्पेस दिखेगा, ठीक है। ठीक है, सी सी है तुम लोग को स्पेस दिख रहा है, बट अभी भी सेम इधर मतलब मैट्रिक्स जैसे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आउटर लूप के बाद एक हम लोग क्या देंगे, लाइन देंगे, न्यू लाइन, ठीक है। ठीक है, आई होप तुम लोग को दिख रहा है कि एडिशन इज 2 2 2 2 2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तुम लोग सेम वे अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन का तुम लोग का आंसर आएगा, सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, इधर साइन चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया। सी तुम लोग को करना है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ओके। सो तुम लोग को 2 मैट्रिसेस लगेंगे और तीसरा जिसमें तुम लोग रिजल्ट स्टोर करने वाले हो। पहले तुम लोग को पहला जो मैट्रिक्स है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा करना पड़ेगा, फिर तुम लोग को क्या देना पड़ेगा, फॉर्मूला देना पड़ेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। बट सिंस ये 2 डायमेंशनल है तो तुम लोग को फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप आई का होता है रो के लिए एंड जे का होता है कॉलम के लिए, ओके। सेम फॉर लूप अगर तुम लोग 3 इंटू 2 करो, मतलब कॉलम अगर तुम लोग करो 2, तो तुम लोग को इधर साइज उसका क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। जे का साइज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर एज तुम लोग जो भी साइज का तुम लोग मैट्रिक्स दे रहे हो, सेम वे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैसा तुम लोग को फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। So I hope you understood the session, how to perform matrix operation. Okay. So we will solve your queries during the online session. Okay. Thank you.